and things did not end on a good term. I would like to say this. A lot of people don't know this, but things did not end on a good term. Today, whatever I am is because of him. He was the producer of both my shows, और प्यार हो गया and ये रिश्ता क्या कहलाता है. But he wasn't happy with me leaving the show. So things did not end on a good note. Not in touch with Mohsin, but Instagram पे कभी hi hello हो जाता है. Shivangi से I'm not at all in touch. Hina से I'm in touch. She's still a very dear friend of mine, and अभी मेरा birthday था, so she wished me also on social media. Yeah, so she is someone I think people have a wrong conception. Have a misconception about her that she's Hina Khan and this and that. She's very down to earth and she's a very sweetheart person. Show से ऊपर कुछ नहीं होता, which is true. I agree कि show ही आपको बनाता है. There are 10,000 people who are working off camera to make you look good. So true. और अगर आप उन्हीं के साथ गलत करोगे, so that's not cool. Unfair. It's not right. It's ridiculous. Correct. तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है. आपको पता होना चाहिए कि where to just draw the line and not cross the boundaries and be in your limits and just do your work. सक्सेस अगर सर चढ़ जाती है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है. सो डिफिकल्ट कि ये ना आगे निकल जाए, वो ना आगे निकल जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं. बहुत डिफिकल्ट है वो चीज सहना. और इतना कंपटीशन है और आज तो सबको एक्टर बनना है. Hey guys, it's me Kanchi Singh and you're watching me on Sunny G Show by Rohit Consulting. सुभजीत के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब करो. अभी करो. Right. All right, ladies and gentlemen, whenever I start a podcast, whenever I start a conversation, मजा तो आता है, खुशी तो होता ही है, because that's something that comes naturally. But then अगर खूबसूरत हसीना अगर रहती है तो of course naturally smile और ज़्यादा brighten up हो जाता है. Thank you so much for joining me over here on my channel, Kanchi. Thank you so much for having me here. It's a pleasure. Before anything else, good day, because we're shooting today. Your project is coming. सबसे पहले उसके बारे में details में बता दो मेरे audience को before we delve into other subjects. So the good news is that it's releasing tomorrow, 29th of March. It's releasing in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Assam, and I'm really looking forward to it. Sneha Ulal and I we are traveling to Indore tomorrow for the promotions, so I'm super excited and really looking forward to it. And fingers crossed. Let's see what happens. Fingers, ये जो है अभी क्रॉस ये अचानक ऐसे बन जाएगा after the project becomes a success. I hope so. मुझे बताओ कि you know, as far as what I know, you started your career long back as a child artist, right? And so बचपन से ही you got a hang of how the industry works and certain things of course you do under the guidance of your parents as well. But eventually जाके जब वो खुद समझ में आने लगता है कि ये चीज ऐसे होता है या वो चीज ऐसे होता है, when your own sensibilities take over what your parents guide you. What was that moment in your career जब तुमको लगा कि चलो ठीक है, अब तक तो पेरेंट्स का गाइडेंस था, चाइल्ड आर्टिस्ट थी, ये था वो था, सही है, बट अभी perhaps I have reached that sense of maturity where I can take things on my own control. So my mom wanted to be an actress, but she couldn't. She got married at a very early age. Then I was born. I'm the only child. So she was like कि मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी. So she had always had that thing of making me dressed up and taking me to fancy dress competitions and all of those things. Photo shoot करवाना. So I have seen the generation from no money to a lot of money. There was a time where I used to get just 500 rupees, 1000 rupees per day, and I've seen that time that we used to travel by bus and we used to go for shoots, and I was very young. My mom used to take me, and the journey has been incredible. I've learned a lot, and today there's a time where people touch wood, they look up to me, and my parents are proud of me. So I'm really happy, and it makes me feel really nice. एक तरफ हो गया love and appreciation from the audience, and that's a definite form of gratification everybody loves. बट दूसरा हो गया वो जो पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी होता है, I think there's no feeling at all that beats that feeling, right? Absolutely. मुझे बताओ that first moment in your life when perhaps your parents had that conversation कि
Beti, we are genuinely proud of you of the fact that you followed your passion, you followed your dreams, and you have actually made it. What was that first conversation like with your parents? So I would like to share this thing that I'm the only girl in the family जिसके मतलब मम्मी पापा की सिर्फ एक लौती बेटी सिर्फ मैं हूँ, बाकी सबके दो दो बच्चे हैं. So ऐसा होता है ना कि आज भी टिल डेट लड़का लड़की में वो फर्क रहता ही है कि अरे लड़की है लड़का है. It still does. So मैं गई थी लीड की फ्रेंड के रोल के लिए एंड मॉम के साथ एंड घर पे बहुत झगड़ा हुआ था. Like I wasn't going. And dad was also like, why are you forcing her? She doesn't want to do a lead का friend. No, I didn't want to go. I was like, यार मुझे नहीं करना लीड की फ्रेंड का यार, मुझे लीड करना है मम्मी, मुझे क्यों आप साइड कैरेक्टर करवा रहे हो मम्मी. इसलिए काम काम होता है, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना चाहिए. I was like, कि बहुत झगड़ा हुआ घर में, बहुत झगड़ा हुआ. I can still not forget that. Like mom and dad के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था. It was 2013. I was 17 years old. And मेरे और मेरी मॉम के बीच बहुत झगड़ा हुआ and she did not eat food and she was really upset with us and all of those things. Then we were like that, चलो ठीक है यार, let's just give it a shot, let's just go for it. गए तो जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर राजन शाही, वो जिस पास हो रहे थे एंड ही सॉ मी, ही वाज लाइक इसको लीड के लिए बुलाओ. तो फिर मैं लीड के मॉक शूट के लिए गई. जैसे ही मैंने मॉक शूट किया, मैंने डायलॉग बोला भी नहीं था एंड ही केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक दैट, यू नो, please come to my office on Tuesday, I want to have a word with you. मैं गई, so with my parents, and I was just 17 years old at that time. मैं गई तो he was like that, congratulations, you're the lead of our show. And my dad started crying. And my mom is like, देखा देखा तुम दोनों ने, मैं जो बोलती हूँ वो सही होता है. उस दिन से पता चला कि माँ जो बोलती है वो बिल्कुल सही होता है. वो एक सीख थी कि माँ की सुनो, माँ जो बोलती है वो एकदम सही होता है. और then it all started and Rest is history. rest is history. You know, even my mom says the same thing कि यार तुम्हारे यहाँ पे अगर कुछ लिखा है ना, and if you're working hard towards that, कोई भी तुमसे वो चीज छीन नहीं सकता. So just see the way destiny turned in your favor. तुम गए थे वहां पे कुछ और because you were just focusing on the process, not the result. But by God's grace, your mother's blessings, your own hard work compiled together, the results took its own course and तुम्हारे फेवर में वो काम हुआ. I don't think कि पेरेंट्स के इंस्टिंक्ट्स कभी रॉन्ग जाते हैं. We should always, हम आज की जो टाइम बचपन से बोलते हैं ना कि ये दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो नहीं है. Absolutely, I agree to that. वो भी एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ का कि जब उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, वो लड़का सही नहीं है, वो लड़की सही नहीं है, मत उसको लाइक करो, मत उसको लाइक करो. बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही है. So we should always believe in parents instincts and जो वो कहते हैं, it's absolutely true. So are you still that, mama's girl? Because of course professionally you're matured and you're doing more and more work. आगे जाके और ज्यादा बेहतरीन काम करोगे. But are you still deep down that mama's girl? Absolutely, I am. And कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले I always take their advice. Yes, decisions आज मेरे होते हैं. They don't force me for anything today, but I always take their advice. And the best part is that I stay with them. Like, you know, when there are times when I feel very low and when I feel very depressed, I have someone to talk to, and it's my parents. So that's a very good thing in life that, you know, I have them and I stay with them in such a city where there is so much of struggle. And because I've seen my friends have been getting struggled with going through so much, having no food, having no electricity in their house. So I've seen that thing. So I touch wood feel really blessed that, you know, I live with my parents. बहुत ही खूबसूरत चीज है ये. एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट टेक्स अ पर्सन फॉरवर्ड इज, आई थिंक, ग्रेटिट्यूड. एंड तुम्हारे बातों से मुझे वो समझ आ रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड इन यू एज अ पर्सन, व्हिच इज अ ग्रेट क्वालिटी. टचवुड. मुझे बताओ कि अगेन कमिंग बैक टू राजन शाही सर, यू मेंशन्ड अबाउट हिम. ही इज अ विजनरी इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, राइट? मतलब उनको वो चीज दिख जाता है जो शायद बहुत लोगों को उस टाइम पे नहीं दिखता. आगे जाके समझ में आता है कि अरे यार सर आप तो सही थे. And as far as Rishta is concerned, your character, your popularity, your good work, I talk about Mohsin, Shivangi, everybody, all of you together made it such a cult in itself, which is why, actors keep on changing, but then the fandom of the show, that continues, right? And that's gonna be there. याद रह जाती है, right? मुझे बताओ कि
the first conversation you already mentioned कि राजन सर के साथ जो हुआ था कि तुम ऑफिस में आओ मेरे साथ, we'll have the discussion on the day which was perhaps your last day on the sets of your Rishta. What was the last conversation like with Rajan sir? Was he emotional? Were you emotional? Because तुम्हारे जिंदगी तुम्हारा जो career रहा है, he has played a pivotal role in guiding you forward. So were you emotional? Um, I was emotional and things did not end on a good term. I would like to say this. Though a lot of people don't know this, but things did not end on a good term. Today, whatever I am is because of him. He was the producer of both my shows, और प्यार हो गया and ये रिश्ता है Yes. कहलाता है. But he wasn't happy with me leaving the show, so things did not end on a good note. But that's life, and I believe that it's okay. Like you shouldn't keep that grudge in your heart, and you should just let it go. If someone doesn't want to be a part of it, doesn't want to be a part of it. You cannot, like, take that personally. So today Rajan sir and my terms are, to be very honest, not that great, but it's okay. I still respect him and I'll always look up to him, and if today also he'll call me, definitely I'll go, and I would want to work with him. So yeah. That's very sweet, and ये मुझे पता नहीं था actually. Nobody knows. And yeah, exactly, so मुझे पता नहीं था, and thank you for being comfortable enough to share this over here. But let me not get too deep into that. वो आपका personal life है and उनका भी है, so let's respect that space. But uh, what you said right now कि अगर वो अभी भी call करेंगे मुझे, I will be welcome to working etc. That speaks a lot about you as a person कि तुम तुम्हारे दिल में grudge वगैरह रखती नहीं हो, and you move on very fast because you want to focus on the right things. सिर्फ देखो जिंदगी में काम के रिलेटेड तो नहीं होता, पर्सनल लाइफ में भी देयर आर सिचुएशंस वेयर परहैप्स पीपल फील एंजाइटी, स्ट्रेस. इट कैन बी ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस जिसके वजह से वो पर्सनल लाइफ में घुस जाता है. एंड वी यंग पीपल राइट, बहुत सारी चीजें होते हैं लाइक मे बी डिस्टर्ब्ड इक्वेशन विद रिलेटिव्स, ब्रेकअप्स, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से एक तनाव जो है वो होता है, and काफी लोगों को समझ नहीं आता. Ever in your life have had that situation where you're perhaps feeling helpless and clueless कि यार मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, and at that point of time where was it your parents who motivated you to come out of that situation, या फिर तुमने आपको self motivate किया कि नहीं जो भी है मेरा रास्ता मुझे खुद ही पकड़ना है and I need to move forward in life? So people don't know this. I have been an OCD patient, obsessive compulsive disorder patient, and I've seen a really bad time during the lockdown, because I I think you got gained weight as well at that point of I time. had gained weight also, and a lot of things were happening in life. But as I said, that parents का होना बहुत जरूरी होता है, and they were there to guide me, and they were there to take care of me, and they were there to, my life has been a roller coaster, like from nobody to somebody to again nothing to again somebody. So a lot of things have happened, a lot of things have been taught to me, and a lot of lessons learned. So yeah. you know you mentioned this thing right now. It's always difficult to go up, बट और ज्यादा डिफिकल्ट मैं मानता हूँ, पता है क्या होता है कि उसके ऊपर जाके जब नीचे आते हो फिर जब वापस उठते हो तुम, राइट. देयर वाज अ पीरियड ऑफ 6 to 7 years वेयर वट एवर रीजन जो भी है तुम्हारे, तुम एक्टिवली दिख नहीं रहते ऑन स्क्रीन, राइट. एंड ऑफ कोर्स एज फैंस, एज लॉयल फैंस, दे हैव दैट क्वेश्चन एंड हंगर कि यार कांची कहाँ है, कांची कहाँ, कब उसको देखे, कब उसको देखे. बट एट द सेम टाइम होता है जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस वेयर you are not able to focus on anything, and I know you talked about that difficult period of OCT at that point of time as well. um, उस टाइम पे did you have any sort of insecurity within yourself कि यार इतना मेहनत से जो मैंने कमाया, जो मैंने मेहनत किया, now because of everything that's perhaps happening in my life I'm kind of losing that grip? तुमको कभी वो insecurity feel हुआ? मुझे अभी भी इनसिक्योरिटी फील होती है. और इनसिक्योरिटी किसको फील नहीं होती है? ये फील्ड ही ऐसी है कि आप किसी और को नहीं So देख much सकते. unpredictability. देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन, देयर सो मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग. तो इट्स सो डिफिकल्ट कि यू नो ये ना आगे निकल जाए या वो ना आगे निकल जाए या मैं पीछे ना रह जाऊं. बहुत डिफिकल्ट है वो चीज सहना. और इतना कंपटीशन है, और आज तो सबको एक्टर बनना है.
मतलब even social media सोशल मीडिया influencers इन्फ्लुएंसर्स सब एक्टर्स बन चुके हैं, like they have eaten our market and it's a fact. I don't mind saying without that. even that preparation or Exactly, practice they don't theater know the kind background of hard work we put in, because they are just acting in front of a mobile and a ring light. We are acting in front of 10,000 people, and you know, they're judging us and they're seeing us. There's a spot boy, there's a lightman, there's a hair, there's a makeup, there's a कितना कुछ costume. रहता है मार्क ये वो Exactly, there are वगैरह so many things. There's a director जिसको आपको जिसकी सुननी पड़ती है. When you are making a video, you're directing yourself, but it's a good thing. Like they are also doing a good job in life, no doubt about that. But कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि इनसिक्योरिटीज आज भी है. लाइक आई फील सो इनसिक्योर कि यार ये एक, आई डोंट मेंशन, बट ये एक इन्फ्लुएंसर है और ही और शी इज डूइंग सो वेल, और मैं बचपन से काम करती आ रही हूँ, एंड यू नो मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है और इसको देखो 11 मिलियन फॉलोअर्स, 12 मिलियन फॉलोअर्स. वो इनसिक्योरिटी है, वो हमेशा रहेगी. पीपल डोंट टॉक अबाउट इट नॉर दे विल, बट I don't mind accepting this fact that I'm insecure or whatever. I am insecure, so big deal in that. आई थिंक इनसिक्योर हो जो भी हो हर एक इंसान में अच्छे क्वालिटीज नॉट सो अच्छे वो रहता है इट्स अ ब्लेंड ऑफ Right. एवरीथिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू बी ऑनेस्ट एंड बी एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स इट ये जो तुमने कहा सोशल मीडिया का इट्स अ रियली रियली डैम प्रेशर राइट मैंने कितने इंस्टेंसेस खुद सुने हैं मेरे जिंदगी में वेयर आई हर्ड फ्रॉम माय एक्टर फ्रेंड्स बोलो एक्सेट्रा कि यार हम गए थे ऑडिशन देने हम स्क्रिप्ट मांगे लेकिन हमको सामने से पूछा गया तुम्हारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने हैं Follows people. तुम्हारे उस हिसाब से बिकॉज दे आर लुकिंग एट इट नॉट फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा ठीक है ये शो करेगा ये इंस्टा पे पोस्ट Like डालेगा कितना actors होगा. are picked from social media as their lead and as their female lead and male lead. So do you think this is the reason why the overall quality of and I'll tell you why it's a cycle because it's the overall quality of work and the craft itself is going down due to which audience भी ज्यादा दिन तक एक ही शो को ज्यादा प्यार नहीं दे रही है नहीं because दे of रही which है. again the duration of shows जो पहले हम देखते थे compared to that the duration of shows are also lessening. I feel it's a cycle. Do you feel the same way? Absolutely, I feel the same way कि पहले टीवी की बात ही अलग थी. There used to be TRP of 4, 4.5. Yes. आज TRP, highest TRP is 2.1, 2.2, Which is sad. which is really sad. And shows सिर्फ 6-7 महीनों में बंद हो जाते हैं. Also, there's one more factor कि आजकल, because so many people want to be an actor, they're ready to come in a small budget. Yeah. Comparatively, our budget is more and their budget is less. So the producer obviously would, मैं भी अगर प्रोड्यूसर होती तो मैं भी, It's pretty much like the cost cutting system in a company. यार बहुत तुम ज्यादा हो गया जो पैसा ज्यादा सैलरी लेता है उसको आप हटा के फ्रेशर या नए को एग्जैक्टली मौका देते एग्जैक्टली. तो एंड आई डोंट ब्लेम द प्रोड्यूसर्स फॉर दैट. अगर मैं भी प्रोड्यूसर होती तो मैं भी अपने कॉस्ट कटिंग सोचती फॉर हैं. श्योर. Yeah. सो इतनी सारी चीजें आ गई है कि कंपटीशन और मार्केट इतना बढ़ गया है एक्टिंग को लेकर कि बहुत बहुत डिफिकल्टी हो रही है. मुझे बताओ कि यू नो देयर इज ऑलवेज दिस थिंग कि सोशल मीडिया एक तो हो गया फॉलोइंग का किस्सा दूसरा हो गया ये मैं हर दिन देखता हूँ अरे यार ये पेज पे स्पॉटेड हो गए वो पेज पे स्पॉटेड हो गए ये वो वगैरह दैट्स अ रियल थिंग That's a एंड business. दैट्स अ बिजनेस ऑफ कोर्स एंड Business. एंड एवरीबॉडी नोज फॉर अ फैक्ट कि इतने पैसे देके इधर स्पॉटिंग हो जाता है वो तो आई इट्स नॉट दैट कि मैं कोई सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ बट माय क्वेश्चन टू यू इज कि बिकॉज ऑफ दिस विजिबिलिटी फैक्टर मेरे हिसाब से perhaps a lot of credible people who are not falling into that trap वो लोग ज्यादा नहीं दिख रहे compared to a lot of people जो लोग शायद उतने talented या उतना potential है उतना मेहनत नहीं है but again जो दिखता है वो बिकता है right so do you think कि ये भी एक system हो गया जिसको हम लोग को differently देखना चाहिए like keep the social media part aside just if I'm going to you know act just see my bloody acting just see my bloody talent right I mean don't see all that कि मैं कितना दिख रही हूँ how marketable or saleable I am do you think that's the biggest conflict an actor is facing today एब्सोल्युटली. आई मीन एक एक काइंड ऑफ बिजनेस हो गया है आज की. अरे वो इतना दिख रही है, वो इतना दिख रहा है, अरे वो इतनी कम एज में इतना दिख रही है, अरे वो इतनी कम एज में इतना दिख रहा है. इट इज सो स्टूपिड. आई मीन व्हाट हैव यू वर्कड? आपने काम किया क्या है कि आप ये टेकिंग दैट. वो पता है क्या, मैं वीरल बयानी में आई थी, वो पता है मैं फिल्मी ज्ञान में आई थी. I find all these things really stupid, and I don't think it makes any difference. If you are a big actor, and Amitabh Bachchan cannot be compared to an, I don't want to name any person, but and Amitabh Bachchan cannot be compared to any young XYZ. actor XYZ. उनकी वैल्यू वही रहेगी. अगर आप दोनों को खड़ा कर दोगे तो लोग अमिताभ बच्चन को ही पहले देखेंगे. दो वो आपको रोज स्पॉटिंग में नहीं दिख रहा है, it does not make any difference.
Quality ahead of quantity, that's what it is. एक और चीज खांची which is very very uh, मतलब true in our field is that कि कभी कभी शायद see there are two types of things. One is that which is in your control, another thing which is not in your control, right? One thing which is not in your control is a kind of negative PR or agenda or propaganda that's being said by someone else against you, right? बहुत सारे टाइम लोग देखते भी है, फिल्में वेब सीरीज में भी दिखाते हैं कि हाउ मे बी टू पुट समवन एल्स डाउन, किसी ने कोई नेगेटिव एजेंडा करके कुछ पीआर नेगेटिव पीआर करवा दिया, जिसके वजह से उसका जो है वो एक्टर या एक्ट्रेस का मार्केट वैल्यू कम कराने के लिए। ऐसा कभी भी जिंदगी में तुमने ऐसा महसूस किया है कि perhaps somebody has tried to do that with you? या फिर अगर ऐसा नहीं है, मे बी तुम्हारे बारे में अननेसेसरीली बैड माउथ करके वर्बल बैड माउथ करके तुमको नीचा गिराने का कभी कोशिश किया? हैव यू हर्ड दोस फनी इंस्टेंसेस फ्रॉम यार समबडी बुराई एल्स? कौन किसकी नहीं करता। कोई दूध का धुला नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी बुराई करती हूँ। कोई दूध का धुला नहीं है, सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये जगह ही ऐसी है कि इतनी, एज आई सेड, इतनी इनसिक्योरिटीज है, इतना कंपटीशन है। आप नहीं देख सकते किसी और को आपसे आगे बढ़ते हुए। आप नहीं बर्दाश्त करोगे। लाइक वो आपके दिल में रहेगा कि यार ये कैसे मुझसे आगे निकल गई, या ये मुझसे कैसे आगे निकल गया। सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, सबको मौका चाहिए मिर्च मसाला लगा के बात करने की। मैं भी करती हूँ। मैं एज आई सेड कोई दूध की धुली नहीं हूँ। मिर्च मसाला लगा के बात करने की, अरे पता है उसने ये क्या, गॉसिप सब करते हैं, बिचिंग सब करते हैं। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मुझे बताओ कि it's been so many years that you're working, and of course there's so much more to do as well, but that one, you know, moment of your career, uh, which you look back, शायद अकेले बैठे हो, and when you're doing a bit of self reflection of your career, you look back and you feel very proud and happy कि यार I'm so glad I did this. Listening to my mother, I think. Right from that word. Right, absolutely. Listening to my mother and just following her rules and regulations and instructions कि बेटा ये करना है या बेटा वो करना है. I think that has made me what I am today. मुझे बताओ, राजन सर का बात आई एम कीपिंग असाइड, यू आर वर्किंग विद मोसिन एंड अदर्स एज वेल, राइट? शिवांगी एक्सेट्रा, आपका उनके साथ इक्वेशन कैसा है? यू स्टिल काइंड ऑफ फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस विद देम? आर यू स्टिल इन टच विद मोसिन फॉर एग्जांपल? Not in touch with Mohsin, but Instagram पे कभी हाय हेलो हो जाता है. शिवांगी से I'm not at all in touch. बाकी हिना से I'm in touch. She's still a very dear friend of mine, and अभी मेरा birthday था, so she wished me also on social media. Yeah, so she is someone, I think people have a wrong conception. I have a misconception about her, that she's Hina Khan and this and that. She's very down to earth, and she's a very sweetheart person. If she knows you and if she's your friend, she'll always maintain that relationship no matter what you are. So I really appreciate this one thing about her. और मेरे डैड मुझे एक चीज बोलते हैं कि बेटा बड़े लोगों से ना अच्छी चीजें सीखनी चाहिए. तो दिस इज वन थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम हर, कि नो मैटर व्हाट, अगर आपके रिलेशंस किसी के साथ है, यू हैव टू नो हाउ टू मेंटेन इट, एंड दैट्स व्हाट दैट वुमन डज. So I really look up onto her, and I really appreciate the kind of a person she is. क्या बात है यार, एंड आई थिंक सो स्वीट दैट, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट वन शो एंड यू, आई मीन मुझे समझ में आ रहा है द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर हर, बिकॉज you yourself you spoke about this equation, right? But of course there are fan requests as well, ये रिश्ता, the time, of course देखो हर एक साल लीप आता है, people come, different people come, but the time when you, Mohsin etc, you guys were there, उसका एक अलग फैन फॉलोइंग तो था ही था. सो ऑफ कोर्स द फैंस, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार तुम लोग टच में हो नहीं हो, उनको बस देखना है तुम लोग को सबको एक साथ. सो कभी कभी डू स्टिल गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम फैंस कि यार दीदी, वी वांट टू सी यू वर्किंग अलोंगसाइड मे बी मोसिन इन समथिंग, ऐसा कुछ? Every day, व्हाट every आर द day, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट? every day the request कि यार इसके साथ वापस से वो जनरेशन लेकर आओ, and that was the golden era and we really loved it, and it was, yeah, I agree to it. I absolutely agree to it. वो टाइम की बात ही कुछ और थी. एंड एंड आई थिंक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन बोलो या नॉलेज बोलो कि वो साल के बाद से, द टाइम व्हेन कार्तिक, शिवांगी, मोसिन, यू गाइस, केम, उसके बाद से वो ये रिश्ता का ब्रांड जो है वो और अलग तरीके. आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज यू आर सिटिंग विद मी ओवर हियर. आई जेन्युइनली थिंक, बिकॉज मेरा फर्स्ट एसोसिएशन और आई वुड से नॉलेज अबाउट ये रिश्ता वाज फ्रॉम दैट टाइम. with us. या Yeah, yeah, yeah.
वो टाइम की बात ही कुछ और थी एंड आई थिंक आई लर्नड अ लॉट. हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे. दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड आई हैड रियली फन एंड हमने कुछ कुछ होता है का गाना शूट किया था. आई स्टिल रिमेम्बर. So I really cherish that time, Yeah. and I always cherish it. We're talking about Ye Rishta, and as far as the show is concerned, the show was in the news some time back. Due to whatever reason, Shehzada, Pratiksha, they were removed from the show. What is your opinion? I know you can't have a first person opinion because you're no longer a part of the show, but given the thing, way situation was handled, what is your opinion on that कि ऐसे overnight निकाला गया and कोई भी तरीके because you're an actor at the end of the day, right? So I don't know again what's the intensity of the situation, but uh, for an actor to see some other actor being removed overnight, ये थोड़ा डर पैदा करता है because Of course डर पैदा करता है. You should know your limits. And जैसा राजन सर कहते हैं कि शो से ऊपर कुछ नहीं होता. absolutely. Which is true. I agree कि शो ही आपको बनाता है. There are 10,000 people who are working off camera to make you look good. So true. और अगर आप उन्हीं के साथ गलत करोगे, so that's not cool. Unfair. It's not right. It's ridiculous. Correct. तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी limitations क्या है. आपको पता होना चाहिए कि where to just draw the line and not cross the boundaries and be in your limits and just do your work. सक्सेस अगर सर चढ़ जाती है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है and then you tend to make mistakes. So I don't know. So this was your first reaction when you heard ki Shehzada and Pratiksha they were removed from the show, right? Does this also make you a lot more conscious and humble because you're already so grounded as a human being? तुमको पता है कि मुझे success chase करना है, मेहनत करना है, but at the same time I need to keep my feet rooted. ऐसे सिचुएशन जब आसपास होता है, does it make you more humble? Yeah, absolutely. As I said that मैं हर चीज से सीखती बहुत हूँ. मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है and I believe that life is a school. Every incident or every thing teaches you a lesson. So this is also a lesson for I think all the actors. Second last question अगर मैं पूछूं तुमको कि every actor has that one dream, right? मतलब ड्रीम्स तो देखो बहुत सारे होते हैं बट हर एक का एक सपना होता है once they start getting that success they see कि यार मैं अपने आप को इधर देखना चाहूंगा इधर देखना चाहूंगी. What is that dream for you? And touch would let this be a manifestation moment so that simultaneously वो हो भी जाए. Oh, for me it would be someone like Alia Bhatt or someone. Yeah, absolutely. Like, let's see if God's been good and graceful. Maybe someday. Touch would hopefully and अगर वो हो जाए फिर याद रखना ये डिस्कशन पहली बार किधर हुआ था. हाँ, manifest किया था मैंने. मैनिफेस्ट हम लोग ने इधर किया था. लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो वुड बी कि so much of journey already child artist से लेके अब तक highs lows highs everything you have heard and you have dealt with as well. वो कहते हैं ना rising like a phoenix from the ashes, you have dealt that as well. बट वो जो बीच वाला पीरियड था जब आप काम नहीं कर रहे थे when you gained weight etc as well, सबसे ज्यादा इजी होता है हमारे देश में लोगों का मजाक उड़ाना, राइट? तुम्हारे वेट को लेके या तुम्हारे द वे यू वर लुकिंग और द वे यू वर अपीयरिंग, किसी ने उस लेवल या हद तक का किसी उस टाइम पे तुमने बुलिंग या मे बी ट्रोलिंग फेस किया because of which it hurt your confidence? ऐसा कुछ हुआ Not at all. Not at all. Touch wood. I feel That's a really good thing, blessed. a It's a rare very thing. good thing and it's a very rare thing. I feel really blessed. और मैंने weight gain नहीं किया. हाँ यार आप तो मतलब ऐसे बोल रहे हो कि weight gain कर लिया. नहीं मतलब वो नहीं इतना भी weight but gain थोड़ा बहुत में भी like you जो know था how it उससे was, right? comparatively gain कर लिया था. And also because lockdown था. So you can't blame me. Gyms खाना were सब लोग closed. So that was also one of the reasons. I'll be very true. Yeah. So nahi, touch wood, nobody troubled me or as you said that किसी ने आपको तंग किया था या आपको confidence low किया था. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. सब कुछ normal था. Everything was good and it was just a phase, passed away and I'm glad.
But in general तुम देखते हो comments वगैरह मतलब what's the percentage or ratio like मतलब in terms of positive and negative थोड़ा तो हर Positive, जगह positive. Touch wood. I have 100%. such good fans that I love my fans Yeah. for this reason that they have always loved me the way I am, no matter I'm thin or fat or whatever. They just love me for the way I am, and I'm glad that yeah, things are good. थिन या फैट मत देखो, टैलेंट देखो, Talent काम देखो. देखो, पोटेंशियल देखो, स्माइल देखो, बिकॉज यू गाइस इज द रीजन व्हाई शी स्माइल्स, बिकॉज उसने पहले भी एक्नॉलेज किया कि whatever kind of she has been relevant through everything and thin, a lot of it is because of the loyal love that you all have shown. Thank you so much for Thank being you with so me in much. this conversation, and I wish you all the best for your new show and everything going forward. And again, let's manifest Alia Bhatt wala cheez sahi ho jaye so that it eventually becomes a success. आप लोग भी दुआ करो, pray करो, manifest करो, so that it eventually turns out to be true. Thank you so much. That's a wrap on the Sunny G show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit with the one and only Kanchi. I'll see you all very soon once again. Take care. God bless. Stay safe and thank you.